ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात वैस्तारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। तो Canto 1 Chapter 8 Text number 18 Prayers by Kunti. You can speak something before starting the prayers of Kunti. What is the character of Kunti? How she was very exalted woman. She was very clever, very austere. She is the aunt of Krishna. She is sister of Vasudeva. Krishna's father's sister Kunti. His father, her father name was Sursena. Sursena is the father of Vasudeva and Kunti. Vasudeva means father of Krishna. Sister Kunti. Her name was Pritha. In beginning her name was Pritha. But when King Kunti was adopted from Shushan Maharaj, King Kunti had no any child, no male or female child. So he went to the palace of Shushan Maharaj, then he requested, I have no any children, can you give your female child to me? So by request he accepted, then he adopted from Shushan Maharaj. King Kunti was also very devoted. So when he pet Kunti, and her name became Kunti also. Pritha and Kunti, two names. Because King Kunti was adopted from Shushan Maharaj, so her name also Kunti. Sometimes in Bhagavad Gita, Krishna also referring Kaunteya, hey Kunti Nandan, son of Kunti, Pritha Nandan. That's why Arjuna's name is Partha. Partha means son of Pritha. Kunti was very, from the childhood, she was very wonderful lady. Very, all the qualities she had. One day in the Chaturmas period, Durvasa Muni arrived in the palace of Kunti Bhoj. You know everyone, Durvasa is very agreeable. Within a short mistake he became a fire. Durvasa जी बहुत क्रोधी है, क्रोध के लिए प्रसिद्ध है, थोड़ी बात पर भी गुस्सा हो. So Durvasa Muni, before starting of Chaturmas, like July, August, September, October, 4-month rainy season in India. In India there is a rainy season, the 4 months, July, August, September, October, sometimes November also. This year Chaturmas begin late because Adhik Mas. So in the period of Chaturmas, sadhaka or maybe yogi, rishi, they stay in one place and perform austerity, sadhana for self
elevation. 4 months they fast, they eat one time, they sleep on the floor, they chant and read the scriptures. After 4 months then they can travel and preach. First get realization, get knowledge, tapasya, so many other activities they perform 4 months for own satisfaction, own purification. So 4 months traditionally still in India, many sadhaka, many devotees they perform Chaturmas. They take food one time. Someone take only fruits. Someone take one time grain fruit. So Durvasa Muni when he came in the palace of King Kunti Bhog, so he was born Hari, Bari and Kari. How I can serve? दुर्वासा मुनि का सेवा करना लोहे के चने से पाने जैसा है। लोहे के चने होता है आयरन ग्राउंड, उनकी सेवा करना बड़ा ये है, मुश्किल है। He knew very well how I can serve. Then he had decided to engage Pritha, Kunti. She is baby like 8-9 years old. She was 8 or maybe 9-10 years old. Baby, she did some do mistake, then no harm. बच्चे अगर कोई अपराध हो जाता है बच्चों से, if some does anything wrong, nobody can take in mind. बच्चे से कोई गलती हो जाता है तो कोई ज़रा उसको ये नहीं कि बच्चे हैं, इनको उतना नॉलेज नहीं है. So Kunti was engaged in the service of Durvasa Muni, Pritha or Kunti. From childhood she knew she was very obedient, very austere, very knowledgeable also. Very wonderfully she served 4 months of Durvasa Muni. Any time, whatever he needs, is just before required, he just present there. If he wants some Ganga water, maybe flowers, fruits, or maybe some abhishyan, like ghee, and other paraphernalia for starting the yajna, need some other paraphernalia, he just before he can arrange. He never feel some uncomfortable. He never ask, why not you bring this thing? Means she read before his mind. She has understanding. She can read the mind of Durvasa. This time he wants this thing. This time is the lunch time, breakfast time, dinner time. There is that time no need to breakfast and dinner. No. Once in a day he was taking only fruits. Whatever required, he just before he can present there. So he very obliged. Durvasa Muni become very pleased. Very small baby, she very expert, her understanding is very good. One day he was just looking the face of Kunti. Durvasa Muni is a face reader also. He can read your palm. He know the future also. Trikaldarshi. Trikaldarshi means he knows present, past and future. So one day by just as he was looking on the face of baby Kunti. Then he read the line on the forehead. He thinks he cannot get children from her husband.
So he was telling, "Oh dear baby, I read your face. I am reading your face. In future, you cannot get children from your own husband. So I am giving one mantra, special mantra. By mantra you can get children from the demigod. By your performance, if you chant mantra carefully, then demigod can come." So he delivered one mantra, very powerful mantra, Amok mantra, cannot be nullified. The fruits of the mantra, results of the mantra will be acting. There is no doubt. By any way you cannot nullify, you cannot vanquish. So when she was grown up, then one day she was very excited. This mantra is maybe or not. What is the effect of this? Like you get something, then you are very excited. What is there? If someone give very nice packet there, you try to open what is there inside. So she was also desired to check the effect of this mantra. One day on the bank of the Ganga, she was just resting on the sun god. She chanted for sun god. By the effect of mantra, sun god appeared in front of Kunti. She was bewildered. She was very afraid to see sun god is present there. Then sun god told, "Don't worry. You chanted this mantra is very powerful. You get one child." She is very afraid because she was unmarried. How? There is a afraid of society, family. What social? There is some social restriction there. So she became very afraid. Then sun god replied, "Don't worry, you become a chaste in your whole life. Your chastity life will be not affected by this." The child born from years, name was Karna. आपका कर्ण से पैदा होगा और उसका नाम कर्ण होगा. Very bright and like a sun. By birth, there was a kavach kundal or the ornament. Karna by birth, you are decorated with nice, valuable ornament like a kavach kundal, so many ornament. He was brightening like a sun. Later on, she became very afraid. Then she, one a box, he kept in box and threw in Ganga. She could not survive. So, box was floating on the water, running fast. One fisherman caught it. Fisher name was Adhirath. When he was opened, there is a very beautiful boy, newly born boy, very beautiful, all ornament, brightening like a sun. So became very happy. He has also no child. He brought home his wife named Radha. She became very pleased, like a वात्सल्यमयी. वैसे कर्ण को पा करके वात्सल्यमयी हो गई.
milk came in the breast also. वो कर्ण को पाकर इतना खुश हो गई, उसके खुशी का कोई नहीं था, वो वात्सल्यमयी हो गई उसकी, जबकि संतान नहीं थे, उसके स्तन से दूध आ गए. She nursed very nicely. Her name is Radhe, because she take care very nicely. राधा ने उसको पाला था, तो कर्ण का नाम राधे हो गया. एक कर्ण का दूसरा नाम है, सेकेंड नेम इज राधे, बिकॉज मदर नेम राधा. She later on she married with King Pandu. Pandu is the brother of Dhritarashtra. Dhritarashtra is the elder brother, or Pandu is younger. Both are brother, son of Ambika Ambalika, the king of Kashi. He arranged Swayamvar. There are many kings assembled there, but he could not invite the king of Hastinapur. So Bhishma Pitama became angry. He went there, just kidnapped the daughter of Kashi Naresh, Amba, Ambika, Ambalika. Amba told, I already chosen boy named Salva. Already ring ceremony happened before, so I cannot accept other man. So he returned to the Varanasi. Then Salva he rejected, I cannot accept it because Bhishma is kidnapped you. I am not a fox. I am also tiger and lion. शेर जो है खुद शिकार करता है, और लोमड़ी और जो सियार हैं दूसरे का शिकार किए हुआ खाते हैं. तो बोला कि आई एम ऑल्सो ग्रेट वॉरियर. इफ ही किडनैप, he should marry it. I cannot accept you. Then she again returned to the Hastinapur and requested. Salva refused to accept me. You married with me. The Bhishma Pitama told, no, I cannot. I took great vow. I cannot marry my whole life. भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा. तो उनके गुरु के पास गई. She went the spiritual master of Bhishma Dev, Parashuram. He chastised your disciple. Why you kidnapped me? He had not married. So he told he should marry with me. Then Parashuram chastised, why you kidnapped, you are brahmachari, why you went for their marriage ceremony? Swayamvar was there, you took vow, you become a brahmachari whole life, so why you went there? If you kidnap, you should marry with Amba. Well, no, I cannot break my determination. I determined, I take a great vow, I cannot marry in my whole life. So Parashuram said, okay, you ready to fight me? आप तैयार हो जाओ युद्ध करने के. If you not accept, then you can fight with me. A great fight, above 28 days maybe, between guru and disciple. The spiritual master and disciple, both are great warriors, Parashuram and Bhishma. Fighting, continue, day night fighting is going on, nobody is defeated. कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था. 28 दिन जो after end of the 20 days, then Parashuram become very pleased. I was testing, you are really determined or not. I saw your determination for perfect. ऐसा कोई ऐसे ले लिया तब लगा चलो गुरुजी कह रहे हैं तो मैं disobey कैसे? I cannot disobey the order of Ishwar. जिसका
ऐसे ही ऊपर से अगर कोई संकल्प लिया है तो गुरु जी की आज्ञा थी क्या कर, कोई बोला कि आप तो प्रतिज्ञा ले, यू टेक कैन बो आई कैन नॉट माई हाई मैरिड, नो नो, हाउ आई कैन ब्रेक द ऑर्डर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। आज के लोग बोले ना कि गुरु का आज्ञा है तो मैं कर लिया प्रभु जी, गुरु आज्ञा बड़ी ऐसी। डिसाइपल मस्ट बी disobey, must be follow the obey of spiritual master. Disciples should not disobey. ये भी third offense है। Third offense, disobey the orders of spiritual master. My spiritual master ordered me, that's why. But he could not break the bow. Fight, end of the fighting, 20 days. Then Parashuram become very playful. Are you testing? How is your determination? How is your... Okay, you can become brahmachari whole life. Don't mind it. In future, don't make any excuse. Whatever obstacle comes in your brahmachari life, it must be tolerated. तो परशुराम इस तरह से डिलीवर द बेनेडिक्शन, यू कैन गो, योर डिटर्मिनेशन विल बी लाइक ए आयरन, लाइक ए थंडर बोल्ट, नोबडी कैन defeat you in any case, any way. Everywhere you can become a victorious. His father is already benedicted. No, you cannot die. When you desire to die, then you can. No warriors can kill you. Yamraj also. He already benedicted by his father Shantanu when he was determined to for celebration. His father was benedicted to इच्छा मृत्यु होगी, कोई आपको मार नहीं सकता है। जब इच्छा होगी, when you desire to die, then you can die. No warriors can kill. कोई मार नहीं सकता है इस पितामह को। तो इस तरह से अम्बा जो है, अम्बा चली गई, फिर उसने तपस्या की। She performed great austerity. Then she also got benediction. I because of डेथ ऑफ भीष्म पितामह, मैं भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूंगी। द नेक्स्ट शी बिकेम ए शिखंडी। दिस थिंग लॉर्ड कृष्णा न्यू वेरी वेल। शी टोल्ड टू अर्जुना, आस्क भीष्म देव इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र हाउ ही कैन डाई। वन डे भीष्म पितामह वाज वेरी स्ट्रांगली, वेरी ब्रेवली ही वाज फाइटिंग। ऐसा युद्ध कर रहे थे कि लग रहा था कि अब अर्जुन ही कैन किल अर्जुन। देन कृष्णा एडवाइज अर्जुन, यू कैन नॉट डिफीट योर ग्रैंडफादर। योर ग्रैंडफादर हैज गॉट many benediction from father and guru also. Nobody can kill, nobody can defeat. He unconquerable, nobody can conquer. भीष्मदेव हमेशा अजय रहते थे। भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपा, ये हमेशा अजय। Nobody can defeat. The whole life is unconquerable barriers. Great योद्धा थे। The Krishna advises, you go and ask your grandfather. First go and go for obeisance, then you request, oh my grandfather, how I can kill you? अर्जुन जाकर मैं आपको कैसे मार सकता हूँ? मैं जानता हूँ आपको इच्छा, you got benediction, nobody can kill. Then you desire, then you can. तो आपको कैसे मार सकता हूँ? इस पिता बहुत खुश हो गए, बोले कि कोई योद्धा मेरे सामने हो गई, some great warriors in front of me for fight, I will fight. But if some woman comes, अगर कोई सामने हिजड़ा आ जाएगा तो मैं नहीं हथियार, मैं नहीं युद्ध करूँगा। लेकिन कोई योद्धा है तो मैं तो युद्ध करूँगा।
कोई स्त्री कोई हिजड़ा अगर सामने आएगा बोलेंगे हिजड़ा है। हिजड़ा क्या बोलते हैं? हैं? This types of barriers comes in front of me, then I cannot fight. So Arjuna returned to Krishna. Then Krishna, what he told him? Arjuna, he told me, if some barriers in front of me for fighting, I can fight. But if some hijana or maybe women come, I cannot fight. And then Krishna advised, you bring Sikhandi here. You go and bring Sikhandi. Sikhandi is her previous life, she was a woman, Amba. She already taken bow. I can cause of the death Bhishmadev. मैं भीष्मदेव की मृत्यु की कारण बनूं. I will cause of the death of Bhishmadev. She brought her. You bring her on your chariot. Arjuna went to the Sikhandi. He said, come, I am fighting with Bhishmadev. You already desired, already benedicted. By your presence, I can kill Bhishmadev very easily. Otherwise, no pressure. Your desire also fulfilled. You already taken bow. I will be cause of the death of Bhishmadev. तो शिखंडी को रथ पर रखने लेके ढाल. शिखंडी कम ऑन द चैरियट ऑफ अर्जुन फ्रंट में. अब शिखंडी को देखकर भीष्मदेव हथियार डाल. भीष्मदेव आल्सो ने वेरी वेल सी अम्बा. अब युद्ध कैसे करेंगे इस तरीके से? जब उसी समय अर्जुन जो है, अर्जुन वाज शावरिंग द रेरो लाइक ए ट्रेंस ऑफ रेन. जैसे मूसलाधार बारिश होता है, लाइक ए रेनी सीजन. क्लाउड इज शावरिंग वाटर लाइक ए टोरेंस रेन. मूसलाधार बारिश तक वर्षा जो है, बाणों की वर्षा हो रही है. अर्जुन वाज शावरिंग द एरो लाइक ए टोरेंस ऑफ रेन. बाणों की वर्षा हो, तो बाण नहीं चला तो कैनॉट फाइट. इससे इतना बाणों की वर्षा हुई कि भीष्म पिता धराशायी हो गए. बाण सैया पर लेट गए. The bed of arrow. He was lying down on the bed of arrow. बाण सैया. सैया होता है ना बेड. He was lying down on the arrow bed. The battlefield of Kurukshetra. तो इस तरह अंबिका और अंबालिका, इसका विवाह हुआ था विचित्र बीज और चित्रांगद से. भीष्मदेव अरेंज मैरिज विथ हिज स्टेप ब्रदर. सौतेले भाई थे ना. सत्यवती का विवाह, दूसरा विवाह हुआ था. दूसरा विवाह शांतनु किए थे सत्यवती से. पहला विवाह गंगा, फर्स्ट ही वाज मैरिड विद गंगा. गंगा son named Bhishmadev. Then again he married with सत्यवती. तो सत्यवती के दो लड़के थे. सत्यवती begotten 2 children. विचित्र बीज चित्रांगद. तो उन दोनों का मैरिज जो है भीष्मदेव अंबिका अंबालिका से कराए थे. तो अम्बा अंबिका से धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए थे. और एक विदुर जी हुए थे, वो दासी थी, मेड सर्वेंट ऑफ अंबालिका. ये 3 जो है, धृतराष्ट्र बाय बर्थ ही वाज ब्लाइंड एंड पांडु ही वाज द he was by birth he was disease like a पांडु रोग. उनको पांडु रोग हुआ था. पिलिया होता है. पिलिया क्या बोलते हैं? जॉन्डिस. By birth he was affected to
jaundice. And Dhritarashtra, by birth he was blind. But Vidura, he born from the maid servant of Ambalika. Ambalika की जो दासी थी उससे विदुर जी. He was very knowledgeable, very great devotee also. विदुर बड़े महान विद्वान थे और भक्त थे, very great devotee of Krishna. तो इस तरह से तीन धृतराष्ट्र, विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये जो है हस्तिनापुर में उस वंश परंपरा में कुरु डायनेस्टी में भरत महाराज का डायनेस्टी है. भरत, दुष्यंत पुत्र भरत, उनसे इसीलिए अर्जुन को भारत कहते हैं, हे भारत, भरत वंशी. तो कुंती का विवाह हो गया. शी मैरिड विथ पांडु, younger brother of Dhritarashtra. She was touring in the forest. कभी कभी राजा लोग वन में पिकनिक मनाने जाते हैं या युद्ध प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग फॉर द हाउ टू प्रैक्टिस फाइट ईच अदर. युद्ध का प्रशिक्षण लेके वन में जाते हैं. दे फाइट विथ टाइगर, लायंस, एलिफेंट. दे टेक रेसलिंग विथ टाइगर एंड लायंस. क्षत्रिय मीन्स कैन डिफीट द लायन आल्सो. जस्ट रेसलिंग मैच, लाइक रेसलिंग मैच विथ एलिफेंट, लायन, टाइगर. ऐसे अपने हाथ से हाथ मिला करके, हैंड टू हैंड दे फाइटिंग, रेसलिंग विथ tiger, elephant. This is also training. जंगल में जाकर ऐसे ट्रेनिंग, अपनी बहादुरी दिखाते हैं. शेर को देखकर लोग ये हो जाते हैं. तो शेर से जो युद्ध करता है, रेसलिंग करता है, तो न क्षत्रिय है. तो sometimes fix the camp in the forest. There is a training program how to fight with lion and elephant. How you can defeat. तो इसके लिए कैंप होता था, जैसे मेडिकल कैंप होता है या ट्रेनिंग कैंप होता है. कभी कभी भक्तों का भी कैंप होता है ना, कभी सेमिनार कैंप होता है. तो लोग जंगल में कैंप लगाते थे टू लर्न द आर्ट ऑफ फाइटिंग, मिलिट्री साइंस, लाइक द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, Bhishmadev. They all are trainer how to become a great warrior. How you can throw arrow, how you can throw brahmastra, how you can throw missile, how you can throw the atomic bomb. That time also, modern weapon that time also, like a brahmastra. So many weapons that time also available. Bhishmadev, Dronacharya, they are great trainer of military science. Dronacharya also, Ashwatthama also, even Karna also. Karna was a great warrior. Nobody can defeat. There is a Kavach Kundal. Already sun god is awarded. Nobody can pinch arrow in the body of Karna. Very strong. Karna, Kripacharya, Ashwatthama, Dronacharya, Bhishmadev. Bhishmadev, one day he can kill 10,000 warriors. He was so powerful. Within a day he can finish Mahabharata. But he was not agreed to do, because he wanted to victory go in the side of Pandava. By mind he was in the side of Pandava. Externally he was fighting the side of Duryodhana. His mind always is obliged. He always compassionate for son of Pandu. When Arjuna before begin the battle of Kurukshetra,
he went and he just taken blessing from Dronacharya. Oh my spiritual master, please bless me and I can succeed in you. Battle of ocean. In the battle of Kurukshetra, like a ocean, there is so many perishers. Crocodile, Demangal, whale, shark. In the ocean of Mahabharata, ocean, the battlefield of the Kurukshetra, there is a great warriors like a sea. There is a furious creatures like a crocodile, whale, shark, शुष्क घड़ियाल, पानी में बड़े बड़े जीव रहते हैं, आदमी को निगल सकते हैं। तो महाभारत सागर में अनेक योद्धा थे, उनसे पार पाना अर्जुन के बस की बात नहीं। महाभारत सागर में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, इनको हराना अर्जुन के बस की बात नहीं। तो कृष्ण told you go and take blessing from your spiritual master, from your grandfather. When Arjuna went to the Dronacharya, he touched the feet with the vision, then he, oh my Guru, please bless me. Then Dronacharya awarded blessing, Vijayi Bhava, be victorious. Dronacharya आशीर्वाद देते, विजयी भव, जबकि वो दूसरे साइड में थे, अपोजिशन में थे। He was opposite side, Dronacharya. When Arjuna went and paid obeisances to spiritual master Dronacharya, then he wanted Vijayi Bhava, be victorious in the battlefield of Kurukshetra. ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई में विजयी भव। Dronacharya, Bhishma, they always compassionate on the son of Pandu. They knew very well that he become big because Krishna is there. Just Pakshe Janardana. On the side of Pandava, their supreme personality of Godhead, Krishna is there, so nobody can defeat. Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurdhara, Tatra Shri Vijayar Bhuti, Dhruva Nitir Matir Mama. Dhritarashtra inquired from the minister of Sanjay, O Sanjay, what happened in the battlefield of Kurukshetra? Dharma Kshetre, Kurukshetre, Samveta Yussava, Mamaka, Pandavasya. Kim Akurva Sanjay? Yes, Sanjay, what happened in the battlefield? My sons and my brother's sons both are very bravely, very desirably, they assemble in the battlefield. What happened there? Their doubt. You are doubting in the religious place, pilgrimage. Kurukshetra is a great pilgrimage, Dharma Kshetra. Dharma Kshetra means religious, very religious bhumi, very religious place. How my son become a victorious? They are doubting my कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो धर्म भूमि है और हमारे लड़के सब अधार्मिक हैं। कौरव सब अधार्मिक थे ना, दुरात्मा थे और पांडव धर्मात्मा थे। बाय बर्थ पांडव वाज वेरी रिलीजियस, वेरी डिवोटेड। तो धर्म की न विजय होगी, धर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र इज द धर्म भूमि। ग्रेट pilgrimage, even demigod also comes and take bath there. For heavenly demigods, for them also, कुरुक्षेत्र is the great pilgrimage. देवताओं के लिए भी तीर्थ स्थल है। Very wonderful land, धर्म land, religious place. How my sons become victorious? My sons always engage in sinful activity. But Pandu son is by birth they are very religious, very devoted. They follow all time the four religious principles. वो कभी 4 नियम ब्रेक नहीं करते हैं. By birth, all Pandu son is great devotee. And Lord Krishna himself, the side of Pandu. तो धृतराष्ट्र से पूछ रहे थे कि what
व्हाट हैपेंड मामका पांडवा शिव किम अकुर्वत। धर्म क्षेत्र है, फर्स्ट ही धर्म क्षेत्र है, धर्म भूमि है। धर्म भूमि है तो हमारी विजय नहीं होगी लगता। तो अंत में संजय बोले कि विजय नहीं होगी आपकी, क्योंकि वहाँ कृष्ण है। जहाँ कृष्ण है वही ना ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, यत्र श्री विजयोर भूति ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है, there is a Krishna is the side of Pandu, Pandu's son. How your son become victorious? No possible, impossible. जहाँ सुप्रीम भगवान कृष्ण है वहाँ पॉसिबल नहीं है कि योर सन बिकम ए विक्टोरियस। यहाँ कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ जोगेश्वर कृष्ण है, जोगेश्वरेश्वर, जोगियों के भी जो ईश्वर हैं, या सारे जोगेश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, वो ईश्वरों के भी ईश्वर महा ईश्वर है, द सुप्रीम ईश्वर, सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम कंट्रोलर, द गॉड ऑफ ऑल अदर इनकारनेशन गॉड आल्सो। और भी जितने भगवान हैं वो सबके ऊपर हैं, उनसे सारे, ऑल द इनकारनेशन कमिंग थ्रू कृष्णा, द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। और जहाँ अर्जुन है, द ग्रेट धनुर्धर, ग्रेट वॉरियर्स, गांडीवधारी, ये कैरी दी वो गांडीव, अर्जुन धारी गांडीव लिए हैं, गांडीव दिए हैं, गांडीव धनुष। चाहे जब तक गांडीव उनके हाथ में है कोई नहीं ये कर सकते, और भगवान है यहाँ। तो कुंती महारानी जो है, महाभारत का युद्ध जो है, बाय द ब्लेसिंग फेवर ऑफ भीष्मदेव एंड कृष्ण, अर्जुन बिकम विक्टोरियस, देन Yudhishthira Maharaj become a king of the throne of Hastinapur. That Krishna wanted before to see Yudhishthira became a king of Bharat, king of India. कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर राजा बने. He was very desire to make Yudhishthira king. He should be on the throne of Hastinapur. हस्तिनापुर के सिंहासन पे युधिष्ठिर को बना, because he is a very good person. He is very religious, very honest. He can obediently, honestly, religiously, he can take care of the citizen. A प्रजा का पालन like a one family member. He can take care of all the citizens like a own son, own family member. इसमें इतना गुण है, very qualified. He should be king of the Hastinapur. He should sit on the throne of Hastinapur. ये कृष्ण चाहते थे कि धर्मात्मा होना चाहिए. राजा अगर धर्मात्मा हो, राजा बहुत भक्त हो, उसमें अच्छे गुण हो, तो अच्छा ना प्रजा का पालन करेगा. Whatever tax collect from the citizens, he can spend fully for the welfare of citizens. तो कृष्ण चाहते थे, तो जो भगवान चाहते वही होता है. मन परपोजे गॉड डिस्पोजे. कृष्ण जो चाहेंगे वही ना होगा. वो तो सब चीज के द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज. जो कृष्ण चाहे वही. युधिष्ठिर को विजय मिली, अब विजय हो गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, बिकम ए किंग ऑफ इंडिया. देन कृष्ण वांटेड टू डिपार्चर फ्रॉम हस्तिनापुर फॉर द्वारका, बिकॉज ही इज ए great family members like Yadu dynasty. He has so many wives, 16,000, more than 16,000 wives. So he requested from Yudhishthira Maharaj
Oh my dear brother, I am also household. I have many wives. We should take care of. मेरे पास इतना गृहस्थ बड़ा गृहस्थ आश्रम है, 16,000 से ज़्यादा स्त्रियां हैं, तो मुझे देखना चाहिए थोड़ा. बहुत दिन तक many months I spent here for your benefit, but I should be take care of my wife, sons and grandsons. बड़ा कृष्ण का परिवार था. कृष्णा family is very big, like this, more than 16,000 wives. Each wife there is a 10 son and 1 daughter. फिर grandson, son, many, very big family. So he requested to King Yudhishthira, please allow, then I can go Dwarka. My duty to take care of dependence. तो युधिष्ठिर इस तरह से युधिष्ठिर महाराज कभी कभी कहते नहीं, you can stay here some more time. युधिष्ठिर को बड़ा भाई मानते थे. He was giving respect as a elder brother. You are touching the feet of Yudhishthir Maharaj, taking the Krishna also following the rules and etiquette. He was always paying the obeisance of Kunti, Yudhishthir and Bhim. He was embracing to Arjuna because he was equal. अर्जुन समान उम्र के थे, लेकिन युधिष्ठिर भीम बड़े थे. तो कृष्ण पर्सनली ही वाज टचिंग द फीट ऑफ युधिष्ठिर महाराज. आशीर्वाद दीजिए भाई. आप कुंती का भी चरण स्पर्श करते थे कि बुआ जी आशीर्वाद दीजिए, अब मैं चलना चाहता हूँ. Then he desired to departure from Hastinapur. Kunti became very bewildered. She was asking, oh Krishna, after the battlefield of Mahabharata, many kings killed in the battlefield, they become enemies of my son. Without you, who can protect me? By your mercy, my sons become victorious, otherwise nobody can defeat Bhishma, Karna, Kripa, Drona. Only by you we become a victorious. If you left me, then who can take care of? What about Arjuna? Arjuna maybe or Bhima become a victorious. There is only you is the cause. Without you there is nothing. Like a body cannot work without soul and super soul. अगर शरीर खूब मोटा तगड़ा उसमें आत्मा न तो क्या करेगा? Example like you are the soul, you are the source of everything. Without it, like a dead body. Dead body cannot move, cannot eat, cannot play. यदुभिः पांडव किम वयम नाम रूपाभ्याम यदुभिः पांडव. हमारा क्या अस्तित्व है? What is the name, fame, glory and nothing without you. आपको माइनस कर दिया जाए तो all are like a dead body. जो भी हुआ है, the presence of you, if you departure, then what about? Who can take care of? She was telling, I want be here you and you take care of us. तो कुंती महाराज मैं चाहती हूँ कि अब महाभारत युद्ध हो गया तो अब जा रहे हैं. Now Mahabharata fighting is finished, then we are going away. I want to battlefield is continuously going on. महाभारत युद्ध चलता रहेगा तो आप रहेंगे हमारे साथ. कुंती बोली कि I want be again start Mahabharata. They start again battle, then you can be here. Otherwise we are planning to go from here. जब तक महाभारत का युद्ध चल रहा था आप साथ में थे. Now finish you are going away from us. तो विपदा संपुना सरस्वत तत्र तत्र जगत गुरु. तब मुझे विपत्ति ही दीजिए. हमेशा विपत्ति रहेगी तो आप साथ रहेंगे. रोज द्रौपदी का चिरहरण हो, रोज लक्षागृह में आग लगे, हमेशा पांडव लोग वनवास क्रम में रहे, कोई न कोई आपत्ति है. I want obstacle in my life.
Every day some obstacle comes, then you will be here. Otherwise you are going from away from us. Kunti Maharishi ने कहा कि मैं जानती हूँ, I know very well. You are not ordinary. You are not my nephew. Nephew बोलते हैं ना? आप मेरा भतीजा नहीं हो, मैं जानती हूँ. I reached the conclusion. You are not my nephew. आप मेरा भतीजा नहीं हो, भगवान हो. But you are acting like an ordinary person. You are acting like my nephew. You are acting like the brother of Pandava. I saw that in the Gokul when Mother Jashoda was chastising with hand and stick. जब आपने you broken the pot of yogurt one day, the day of Deepavali, the broken the yogurt pot in the house of Nand Maharaj, Jashoda became angry. She heard many complaints against you. Other gopi also always complaining, oh mother, your son is very naughty. She came to my house, she broken the yogurt. She distributed the yogurt and ghee for monkey and covered by. हमेशा कंप्लेन आता था. माँ जसोदा के घर, he always some complaint comes in the house of Jashoda. Gopi and others covered by also complain. Oh my mother Jashoda, your Kanha is very naughty. तो माँ जसोदा भी परेशान थी, लेकिन एक दिन देख ली हाथ कंगन को आरसी का. एक दिन ऐसे हो कि घर में ही मटकी फोड़ दिए. तो माँ जसोदा बहुत की कंप्लेन आता था, लेकिन ये घर में ही उदाम मचा दिया है. I heard complaint from other houses, but now he did in his own home. इसको दंड देना चाहिए. We should punish. अभी करेक्ट, हमें इसको दंड देकर सुधारना चाहिए. बालक बड़ा ही हो गया है. माँ जसोदा का कंप्लेन आता है, कोई कैसे रही गोकुला नगर में. Gopi comes in the house of. The purpose is not complain. Their purpose to how to see Krishna. कंप्लेन एक बहाना था गोपियों को. वास्तव में गोपियां कंप्लेन करने के लिए नहीं आती थी. That behind their reason is to how to see the beauty of Krishna. So beautiful. यह हमारा हृदय लुट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे. Krishna looted the heart of everyone because he is the great thief. He is the thief of the heart also. चित चोर. भगवान लोग जानते हैं कृष्णा इज द बटर थिफ. नो, ही कैन स्टील योर हार्ट. ही accumulated in the heart dust of the sin. He can destroy. हमारे हृदय में जो पाप है ना, sin accumulated birth after birth in the heart, he can steal the sin also. पाप चोरम शिराधिकाया हृदयस्थ चोरम. अनेक जन्मार्जित पाप चोरम. अनेक जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल कल्पांतर का जो पाप है, ये accumulated sin in our heart, he can restore, he can steal. पाप को भी चुरा लेते हैं, इसलिए उनका नाम है पाप चोरम. चित्त चोरम. चित्त में हृदय को भी चुरा लेते. एंड बटर थिफ तो है ही है. ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम. लोग जानते हैं भगवान माखन चुराते, लेकिन हृदय भी चुरा लेते. यह हमारा हृदय लौट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे. गोपियाँ कहती हैं कि मेरे हृदय को श्याम सुंदर ने चुरा लिया है. श्याम सुंदर कृष्ण इज स्टोलन माई माइंड एंड हार्ट. उद्धव जी की एक मन था, कृष्ण ले गए अपने साथ. यह हमारा हृदय लौट चुका है, श्याम तेरी छटा माधुरी पे. पीत पट पे, सुलट पे, मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मई सांवरी पे. पीत पट पे भगवान का जो पीताम्बर है, येलो ड्रेस, very brightening, very wonderful, very charmful.
अगर वो तो आँख जाता है तो वहीं रह जाता है। माई आईज व्हेन saw the with yellow dress of Krishna so attractive, my eyes become merged in the beauty of Pitambar. पीत पट पे, शुलट पे, his hair is also very beautiful, काले घुंघराले। भगवान का केश भी बहुत सुंदर है, इसलिए केशव है। his hair is also very beautiful, कोई तुलना नहीं है, nobody can compare कि my hair like Krishna। शुलट पे, मुकुट पे, इनका जो हेलमेट है बहुत सुंदर है, मयूर पिक्ष है। so many valuable jewel also, उनका मुकुट भी बहुत सुंदर है। मुकुट पे, पीतपट पे, शुलट पे, मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मयीषा ओरी पर। His face is so charming. When he was keeping flute on the lap, then his beauty also become so wonderful. मूर्ति सुषमा मयीषा वजी पे, उनका जो ब्लैकिश कलर है, लाइक ए रेन क्लाउड, वेरी वंडरफुल, लाइक ए येलो, लाइक ए ब्लू लोटस। उनका जो मुखमंडल है बहुत सुंदर है, वो देखता है ना एक बार तो और देखने की उसकी, और दूसरा कोई नहीं देख सकता। इफ यू सी द फेस ऑफ कृष्णा देन यू कैन नॉट डिजायर टू सी हेमा मालिनी और अदर हीरो एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस। Krishna is a great actor. No, there is no beauty can compare. Krishna is so madhuri, so sweetness. This Bhakti Vrindavan, one devotee came Vrindavan. They told, या हमारा हृदय लूट गया, I lost my heart. Where? बोला I lost my heart. हृदय कैसे खो गया? तब वृंदावन, मेरा हृदय वृंदावन में खो गया। बोले नहीं, पर्स खो सकता है, मोबाइल खो सकता है। You can lose your money, you can lose your jewel, you can mobile, you can other person. How you can lose your? No, I lost my heart in Vrindavan. Where? Why? Because Krishna is the great thief. ये चित्त चोर है, चित्त को भी चुरा लेते हैं। या हमारा हृदय लुट चुका है, उसी का ये है कि I lost my heart in वृंदावन। आप वृंदावन जाओ तो बड़ा सावधानी रखना कि आपका हृदय न चुरी जाए। कोई बोलता है प्रभु जी वृंदावन जाना ना तो चश्मा बैग में रखना है। Then you walk on the road or some Loi Bazaar, be careful with monkey. Monkey also a great thing because Krishna monkey. कृष्णा चोर हैं तो उनके बंदर भी बहुत चोर हैं। कृष्णा is great thief, his monkey also. Very carefully, very attentively to take care of your mirror, your purse, your mobile. तो बंदर इतने सफाई से तो मालूम नहीं पड़ता है। आप जा रहे हो इतना फास्ट और इतना सावधानी से चश्मा ले तो मालूम नहीं पड़ता है। हाँ, इतना मैंने हाउ इज ट्रेंड, आप ऐसे बारीकी से लेते हैं, आप समझ लें कितना वो ट्रेंड है। और मोबाइल बात करते ले जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, इतना वो ट्रेंड है। इतना कोई अगर फल बेचने वाला है, फ्रूट सेलर, थोड़ा ध्यान गया बस तुरंत आके देगा। ऐसा वृंदावन वन फ्रूट सेलर, he was keeping fruits on the table, थोड़ा ध्यान इधर गया ना, बंदर इतना फास्ट आते हैं, उनका टारगेट जो है ना मिस नहीं होता है। इतना टारगेट के पक्के हैं कि एकदम ले जाते हैं। बंदर भी बोलते हैं वृंदावन के, बहुत नट्टी हैं। I was having a fruity and it was like I was doing a parikrama with temple. I was taking the stop there. There was fruity was there. And suddenly some fruity came and took it from my hand. इतना फास्ट it was there in my hand. तो कुंती महारानी saw that when Mother Jashoda was chastising, why you were doing like this? Why you broken the pot of yogurt? जब वो जोगर्ट पॉट बहुत पुराना था, बहुत अच्छा था,
वो घी पी करके स्ट्रॉन्ग हो गया था। Earthen pot also, when you keep their curd and ghee, pot become also very wonderful, very charming, very strong. Some माँ छड़ी लेकर के she hold the stick and chastising. One hand drop and stick. So Krishna was crying like anything. That time Kunti was present in the house of Nand Maharaj on the occasion of Deepavali. On the day of Deepavali, this pastimes is happened. Kunti was there. She saw personally that Krishna was crying, tears are falling from eyes, his body are trembling. So देख करके वही, she remembering that pastime. We were Lord, but we were fearing to see the stick in the hand of Mother Jashoda. अम्मा जसोदा के हाथ में छड़ी देखकर ऐसे डर गए थे जैसा कि really became afraid. आप रो रहे थे, you are crying. तो आप इस तरह की क्यों लीलाएं करते हैं? अत्यंत विडम्बनम. Your pastime is very vimohyati. Even a great Brahma and Shiva also sometimes bewildered to see your pastime. आपकी लीलाएं ऐसी होती हैं कि बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं. आप क्यों ऐसा करते हैं? आप जो कि भगवान हैं, इवन काल भी आपसे डरता है. इवन यमराज also afraid from you. All the demons, demigod, yaks, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, all are afraid from you. Nobody can. But by seeing the stick on the hand of Mata Jashoda, you are crying like it. आप इस तरह की लीलाएं क्यों करते हैं? मैं अब समझ गई. I reached on conclusion, you are not ordinary, you are not nephew. You are not the son of Devaki and Vasudeva. You are Par Brahma. You are father of all father. आप सबके father हैं. The father of the universe. पिता महर्ष जगतो. Nobody can become mother and father of it because you are the real father or mother of the creator. तमेव माता च पिता तमेव. नमस्ते पुरुषम तु आद्यम. आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम. I know that. She was expressing. नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूँ. I am paying obeisances at your lotus feet because you are Ishvara. You are beyond of this nature. तो Kunti first time she was paying obeisances to Krishna. Krishna always pay obeisances to Bhuva Kunti. Krishna always paying obeisances to one Kunti. लेकिन इस बार कुंती प्रणाम कर रही. हमेशा कृष्ण प्रणाम करते थे अपनी बुआ को, लेकिन आज उल्टा गंगा बह रही है. कुंती महारानी प्रणाम कर रही है. मानो कृष्ण कहेगी, भाई बुआ जी, why you are paying obeisances? You are elderly, you are my aunt, why you are doing like this? No, I know, you are not my nephew, you are not son of Devaki, you are supreme, you beyond of this nature. Tam Ishwaram, Tam Adi Ishwaram, Govindam Adi Purusham. Govindam Adi Purusham. You are only one personality beyond of this creation. After annihilation, you are only one Purusha, Adi Purusha, Parabrahma, Param Dhamma. I know that. You are Ishvara, Parameshwara. तो कुंती महारानी प्रणाम चालू करती हैं. बिगिन फ्रॉम द नवेद. चरण में प्रणाम नहीं करते हैं, भतीजा है शर्मा जाएगा. कुंती महारानी का प्रणाम करना भी बड़ा अद्भुत है. चरण में न प्रणाम होता है तो बोलते हैं सी लगी या मुंह लगी. लोग बोले बहुत मुंह लगा है, हमेशा मुंह लग जाता है. लेकिन कुंती महारानी ने देखा कि शायद मेरा भतीजा है, माय नेफ्यू में he became a shame if I touch the feet. That's why she was begin from the nave. पंकज ना भाया, नाभि से प्रणाम करती है. तो करता है नाभि से. नम पंकज ना भाया. I am paying my obeisances to your navel because navel is like a look like a lotus flower, blooming lotus. Or other meaning means navels. From navels there is a
lotus flower sprout. On the top of the flower of lotus, there is a Brahma comes. You are the origin of Brahma also. You are the origin of all the planet also. Through the novel, lotus comes and all the planets also come. You are the source of everything. So Kunti Maharani paying obeisances, Namah Pankaj Nabhaya, Nabhi mein pranam, Namah Pankaj Maline. Then she was paying obeisance to Pankaj Mali. Krishna always wearing the lotus garland. Pankaj Mali, Kamal Mali. माला को प्रणाम करते हैं. Hey, Kamal Mali, you are always wearing the garlands of lotus flowers. Hey, Kamal Mali, आपको प्रणाम करते हैं. फिर कमल नेत्र, नमः पंकज नेत्र, your eyes look like a lotus. फिर आँख को प्रणाम करते हैं. हे कमल नयन, आपको प्रणाम करता है. पेइंग obeisances to पंकज नाग. And last में चरण पे, in the end she was paying obeisances to lotus feet. पंकजांघ्रे. अंत में चरण कमल में प्रणाम करते हैं. नाभि से ही begin from navel, then garland, then eyes, then end of that, then she was paying obeisances to the lotus feet of Krishna. And she knows, so reached that point, Krishna is not ordinary, he is the supreme. अद्भुत प्रार्थना है कुंती महारानी का. नमः पंकज नाभाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः. Vasudev, son of Vasudev and Devaki, as same we are the son of Nanda, Jashoda also. And another way, you are the son of all Brajvasi. When Brahma has stolen the calves and cowherd boy, then Krishna personally become the cowherd boy and calves. So सबके सभी वात्सल्यमयी सबके पुत्र बन गए. ब्रह्मा जी cowherd boy चोरी करके ले गए थे ना, तो कृष्ण उतने ग्वाल बालक बन गए थे, तो सबके पुत्र हो गए. और सभी गायों के भी, she became the calves of every cow. जितने बछड़े को ब्रह्मा stolen all the calves and cowherd boy. The Krishna personally become calves and cow. All cow is also fortunated because Krishna is drinking the best milk of the cow also. Krishna drinking the breast milk from the gopis also. Those who are Vatsalamayyi, those who begotten children. तो गायों और गोपियों को भी अवसर प्रदान किए, उनके बच्चे बन गए. इसलिए एक साथ नंद जसोदा, देवकी वसुदेव को कहिए, नंद जसोदा समस्त गायों और गोपियों के भी पालक. नंद गोप कुमार राय, गोविंदाय नमः. मैं आपको नमस्कार करती हूँ. आप भगवान हैं. यू आर भगवान, यू आर नॉट रथवान. अर्जुन जैसे बोले ना कि आप रथ के कोच नहीं है. यू आर नॉट माई चैरियट ड्राइवर, आई नो दैट यू आर भगवान. Then Arjuna saw the universal form of Krishna in the battle, then he, you are not my friend, you are not brother, you are not my charioteer, I know that you are a Bhagwan. आप भगवान हैं, विश्व रूप देखे तो आप भगवान हैं. All great sages and demigod, so many other people like यम लोग, जन लोग, तप लोग, महर लोग, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, सब जगह से लोग स्तुति कर रहे थे विराट रूप में. अर्जुन ने किया परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम देवो आहुस्ता मुनय सर्वे. ये मैं ही नहीं करूँ, सारे ऋषि मुनि भी प्रणाम कर रहे हैं आपको. आहुस्ता मुनय सर्वे, देवर्षि नारद तथा नारद जी, असित, देवल, व्यास सब लोग कहेंगे आप भगवान. आहुस्ता मुनय सर्वे. Amongst all the great rishis like Narada, Asita, Devala, Vyasa, they also reached that point, you are supreme. आप भगवान, हमारे रथवान नहीं, आप भगवान. The Kunti Maharani also reached on that conclusion, Krishna is not my Jew. He is not a son of Devaki Vasudeva.
is the father of everyone. Pita most jagato dhata mata pita mama. Krishna is the source of all creation. All the demigod also emerged from the Krishna body. सब कारण के कारण. धन्यवाद. टाइम हो गया ना? टाइम ज़्यादा हो गया ना? Okay, thank you. You understand? Mataji, you understood? You understood something? Maybe. Yes, of course. Thank you. I take home from this that if we live on the side of dharma and religiosity, victory is going to always. Thank you. You from Bihar, I am also from Bihar. बिहार में बाहर है. हम लोग वहाँ भोजपुरी ही बोलते हैं. स्टिक भोजपुरी also. भाषा में भोजपुरी जो है बहुत शुद्ध है. भोज में पूरी और भाषा में भोजपुरी. भोज होता है ना कोई फेस्टिवल तो उसमें पूरी बनाते हैं, पकौड़ा बनाते हैं. पहले ब्राह्मण लोग पूरी खाते थे. ब्राह्मण cannot eat rice सब्जी. वे पक्की रसोई बोलते हैं. घी में जो फ्राई हो. If you cook in ghee like a पूरी, पकौड़ा, other thing, this called पक्की रसोई. ब्राह्मण लोग पहले पूरी खाते थे, पक्की रसोई. They cannot eat rice, दाल, सब्जी. तो उसको बोलते हैं पूरी. भोज में पूरी होता है. बड़ा बड़ा भोज हो फेस्टिवल्स में पूरी लोग बनाते. तब भोज में पूरी या भाषा में भोजपुरी. भाषा में भोजपुरी और भोज में पूरी. हम मॉरिशस जाते हैं तो वहाँ भोजपुरी में भी बोलते हैं. वहाँ बहुत भोजपुरी के लोग हैं मॉरिशस में. They speak भोजपुरी. तो वहाँ sometimes the person can you speak in भोजपुरी. भोजपुरी में भी वहाँ भजन होता है. थैंक यू. धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की. ताई गौर प्रमाण दे.